Hello everyone. Today we will discuss government budget and the economy. In this topic, we will discuss government budget meaning, objective of the government budget, component of the budget, and budget deficit. In the last, we will discuss some important questions. First, we will start government budget meaning. Government budget is a statement of the expected receipts and expenditure of the government during the period of coming financial year. It means the total expected receipts of the government and then total expenditure of the government during that coming financial year. The statement of that record is called budget. बजट क्या है कि टोटल जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं उस साल के आने वाले साल में और जितना भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी उनकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको हम बजट कहते हैं. बजट है टू मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट इज बजट is prepared at all level. Maybe it is a central government, state government, local government. But here we restrict our study up to a union budget only. State level and local level budget we will not discuss here. So second thing is it required to be approved by the parliament before it can be implemented. Before implemented the budget, government should approve from the parliament. You know that without approval, the parliament budget cannot be implemented. Maybe any organization or maybe any level of state government or maybe the local government. First, they take approval from the authority, like in center it is parliament, state government is again then procedure, maybe Vidhan Sabha, then it can be implemented. So government first take approval and then it will be implemented. But why government prepare budget? Maybe this question raised in your mind. Why government prepare a budget? To prepare that budget, government has some objective. And what are those objectives to prepare that government? First objective is reallocation of resources. Because without prepare the budget, government don't know where they need more money, where they need less money, or where they require more expenditure, where they require less expenditure. So for all this procedure, they prepare a budgetary policy, or in budgetary policy, they have some objective. The first objective is reallocation of resources. Through this policy, government main objective to reallocate the resources according to the priority, the economic and social priorities. Government influence this budget or allocation of resources through the two main heading, like as a taxation and subsidy policy, and second is the directly producing goods and services. It means if sometime government want to prohibit some activity or some production of the some goods, so government can impose a heavy tax on that goods, like government want to prohibit the production of the liquor or maybe that another product, so government imposes heavy tax on, or sometimes government promote the goods, the production of that particular product, so government provides some subsidy. In the same way, some goods which are maybe private sector are not interested to produce the goods, so government directly produce that goods and services. So in this way, they try to reallocate the resources through this tax policy and then directly producing goods and services. The another main important objective is reducing inequality in income and wealth. Inequality, I think you know, inequality means when the gap between the poor and rich are more. So government, maybe it is inherent part of the every economic system. Maybe everywhere inequality arise in the economy. So government main aim is to reduce such inequality of income and wealth, but through this budgetary policy. Government try to influence the distribution of income by imposing tax on the rich people and spending more on the welfare of the people. In this way, if they impose a heavy tax on the rich people, they reduce some extent the purchasing power of the rich peoples, and some extent they reduce the income of the rich people, and then they raise the standard of living of the poor people. So in this way, they try to reduce the inequality or maybe the gap between the rich and the poor. So that is the another main important objective. इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो होती है कि दो ग्रुप जो है रिच और पुअर का गैप जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ट्राई करती है कि इनकम को कम किया जाए, जो जिनके पास ज्यादा पैसा है, रिच है उन पे ज्यादा हैवी टैक्स लगा देती है,
और जो पुअर फैमिली है उनके लिए वेलफेयर के ज्यादा काम करती है ताकि उनका स्टैंडर्ड बढ़े, तो वो कुछ हद तक रिच और पुअर का जो गैप है वो कम हो जाए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट वेल्थ और इनकम का जो गैप है इनइक्वलिटी का उसको कम करने की कोशिश करती है। उसके अलावा एक अनदर ऑब्जेक्टिव मेजर इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है? स्थिरता। सो गवर्नमेंट थ्रू दिस बजटरी पॉलिसी ट्राई टू use, yeah, prevent business fluctuation of inflation or deflation to achieve the objective of economic stability. Economic stability means sthirta, but economy is not always stable. It sometimes is high level, sometimes it's low level, sometimes inflation or deflation. I think you know the inflation kya hota hai when the price rise at very high rate. At that time, that is called inflation. Deflation when it is priced down at very high rate, that is called a deflation. But as well as maybe it is also factor related to the value of money. But here we will not discuss that because already we have discussed inflation in class 11. So through this objective, government try to control the different phase of business fluctuation through this budgetary policy. Like sometimes government prepare a surplus budget policy during that inflation and deficit budget during deflation. Now the questions arise here, what is surplus budget and then deficit budget? Maybe later on we will discuss what is this surplus budget and deficit budget. But here surplus budget means when receipts are more, total receipts are more than the total expenditure, that is called a surplus budget. It means government have enough money. That means government are not spending money on the welfare programs. Then deficit budget means total expenditure is greater than the total receipts. It means government are spending more money on the welfare on the different activity. So the deficit budget. So government prepare a surplus budget during inflation and then deficit budget during deflation to maintain stability of price in the economy. When government are prepare a surplus budget, mean they are not spending more money, they are imposing a maybe heavy tax, they are collecting money, more money from the people. So in this way, they are in some extent reducing the purchasing power of the people. So that means they reduce the inflation. So in inflation time, government try to prepare a surplus budget. So in this way, government maintain the stability. The another major objective is reducing regional disparities. Regional means the area-wise disparity. एरिया वाइज या रीजनल डिस्पैरिटी क्या होती है कि जब दो एरिया होते हैं किसी भी कंट्री के, दो पार्ट हैं, दो रीजन हैं, उन दोनों के बीच में गैप कुछ ज्यादा हो जाता है. सम रीजन आर डेवलप, सम आर बैकवर्ड. सो थ्रू दिस government budgetary policy, government try to reduce that regional disparity by taxation or expenditure policy. Sometime if in the backward region, government give a some taxation rebate to set up industry in that backward region, or sometime maybe spend more money for that, like as government open some special economic zone for to promote the some backward regions. So in this way, government try to reduce the gap between the two regions. So all equality arise in the all regions. So these are some objective. Maybe another one or two objective is there, like as public government public sorry managing of the public enterprises. The government has some enterprises that manage through this budgetary policy. So these are the major important objective of the government budget. Now the questions arise here: how budget is prepared, or what are the component of that budget, or what are the types of that budget. So we will discuss now component of budget. It has two component majorly: revenue budget. Revenue budget, it is running for various government department and for administrations. I mean under this, the revenue expenditure or revenue receipts. The total of this is called a revenue budget. And the revenue receipts, later on we will discuss what is revenue receipts and revenue expenditure one by one. But it is related to the running various administrative department, a government department. And so this is a revenue budget. Another way we can say it is a routine expenditure of the government or maybe the receipts. Capital budget, it related to the assets and liabilities of the government. It affects the assets and liabilities of the government. So capital budget is equal to capital receipts plus capital expenditure. Now, what is revenue receipts? What is revenue expenditure? What is capital receipts? What is capital expenditure? We will discuss one by one here.
So first is revenue receipts. Receipts means if we receive money, that is called a receipts. So revenue receipts are those receipts which neither increase liability nor decrease assets. It means if we receive money, then there is a no liability increase एंड नॉट डिक्रीज एनी एसेट्स. इसका मतलब क्या है कि जब हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं वो ना तो कोई लाइबिलिटीज को इंक्रीज करती हैं और ना ही कोई एसेट्स को डिक्रीज करती है. मतलब हमें पैसा मिल गया, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है कि हमने उसको वापस देना है, और ना ही हमारी कोई एसेट्स है रिड्यूस हुई है. तो इस तरीके से जो रिसीप्ट्स होती हैं वो रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं. लाइक इनके दो फीचर्स हैं, हम कह सकते हैं दीज रिसीप्ट्स डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट. इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ऐसी कौन सी रिसीप्ट्स है जो ना तो लायबिलिटी बढ़ाती है, मतलब सीधा ही गवर्नमेंट उसको ले लेती है, पर उसके बदले में गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटीज नहीं होती है, एंड देन कोई उसकी एसेट्स भी कम नहीं होती है, तो उसको हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स कहते हैं. समटाइम जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो क्या आते हैं कि वो कुछ आइटम्स देते हैं, वो आइडेंटिफाई करवाते हैं कि इट इज रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स की रीजन. तो आपको इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो रीजन आपको पता चल जाएगा कि दोज रिसीप्ट्स व्हिच डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, दैट इज द रेवेन्यू रिसीप्ट्स. मीन द टैक्स रिसीप्ट्स. इफ वी गवर्नमेंट impose tax on the people, then they receive some money, so that tax receipts is a revenue receipts. So it means revenue receipts do not create any liability or not reduce any assets. Second character is that these receipts do not cause any reduction in assets of the government. Mean the receipts which are not reason for reduction of the assets of the government, like income from public enterprises. If we receive income from the public, I mean like as another word it is called a dividend. If we receive profit from the public enterprises, so that not reduce the assets of the government. Okay, it means that money that is part of profit. If we sell the shares, that may be not a revenue receipts because that reduce the assets, but here income which profit we receive, that is not a reduced reason for the reduction of the assets. So income from public enterprise is a revenue receipts. So revenue receipts are those receipts which neither increase liability nor decrease any assets, is called a revenue receipts. Now constituents of the revenue receipts, from where revenue receipts we receive, या another word we can say कि revenue receipts के क्या क्या components है, क्या क्या part है, कि कहाँ कहाँ से revenue receipts आती है. तो मेजरली टैक्स रिसीप्ट्स हैं. टैक्स रिसीप्ट्स में बहुत सारे टाइप के टैक्स हैं. इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है. इनकम टैक्स आई थिंक यू नो, जो इनकम के ऊपर लगता है. कॉर्पोरेशन टैक्स जो कॉर्पोरेशन या प्रॉफिट के ऊपर लगता है. स्टेट ड्यूटी है, गिफ्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, जीएसटी है जो अभी न्यू इम्प्लीमेंट किया गया था थोड़े 1 or 2 years before. So these are the tax receipts. It means if government impose these tax, it means it not decrease any assets of the government and not increase any liability of the government. These are the some non-tax receipts, which is not a compulsory tax, is a compulsory payment from people to the government. It means if government impose tax, it is liability of the people to pay that tax to the government. It means it is a compulsory payment without any return benefit. But non-tax receipts, it is a not a tax. If we avail the services, then we have to pay that tax, like fee है, fine है, sheet है, sheet special assessment है, income from public enterprises है, income from the sale of spectrums है. So these are the non-tax receipts. Fees, I think you know, if we avail any services, then we have to pay fee like passport fee, other the license fee, etc. If we will violate the rules, then they impose some fines. A sheet is a one type of income of the government. If anybody legal here property they want to transfer without any legal here, if they want to transfer their property, then government impose some special sheet, special assessment if the value of the property enhanced due to the government activities. Income from public enterprises, the government has some enterprises, the government receives some money, income. Income from the sale of spectrum means like the spectrum sale, etc. So these are the non-tax receipts, because by this they are not reducing any assets and not paying return.
It means there is no liability from this. So these are the revenue receipts and grant and donation. Sometimes we receive grant and donation from the another country, that there is a no liability of the government to pay return. So that is a revenue receipts, but it is a non-tax, but it is not compulsory imposed by the government. Government cannot force to the people कि they have to pay. तो इसलिए इसको हम नॉन टैक्स रिसीप्ट्स कहते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट फोर्स नहीं करती है. टैक्स रिसीप्ट्स होती हैं, गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, लॉ के अकॉर्डिंग लीगल हेयर है ये, इसको गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ता है हम लोगों का जो पीपल्स हैं टैक्स, अगर उसकी इनकम होती है तो. ठीक है, इस तरीके से टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट है. अगर हम इसको टाइप्स समटाइम दे कैन आस्क द क्वेश्चंस कि टैक्स क्या होता है या टाइप्स क्या क्या हैं, ये दो. तो टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउसहोल्ड्स, फर्म्स और अदर इंस्टीट्यूशन यूनिट्स. Tax are broadly classified as a progressive and regressive tax. Sometimes they can ask the difference between progressive and regressive tax. Progressive tax है, tax said to be progressive when the rate of tax increase with increase in income. जब tax प्रोग्रेसिव टैक्स कब कहलाता है? जब प्रोग्रेसिव होता है जब रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो टैक्स का जो रेट है वो भी बढ़ता जाएगा. इट मीन इट गिव ए लेस बर्डन ऑन द पुअर एंड मोर बर्डन ऑन द रिच, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो ज्यादा टैक्स लगेगा, और ज्यादा टैक्स लगेगा तो ज्यादा बर्डन पड़ेगा. बट जिसकी इनकम कम है या इनकम है ही नहीं है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है तो उसके ऊपर कम बर्डन पड़ेगा. उसके बाद सेकंड जो है इसके ऑपोजिट में रिग्रेसिव है. इट टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव व्हेन इट कॉज ए ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. मीन व्हेन इनकम इंक्रीज then the tax rate decrease or proportionally may be the same. So if it give a more burden on the poor section and less burden on the rich peoples, because sometimes if same income is there, if some people have some less money, then the government are imposing heavy tax on that. So it means that give a more burden on the poor section of the society. So it is a regressive, opposite of the progressive. Another type is there specific tax. When tax is levied on a commodity, these are on income basis or maybe the price basis, but it is imposed on a commodity on the basis of its unit size or weight. Okay, it is not imposed on the price basis or the income basis, but it is imposed on the unit size or weight. Now another type is there direct and indirect tax. Direct tax are those tax which is burden cannot be shifted to the another persons. Mean really paid by the person whom it is legally imposed. Mean जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को ये पे करना पड़ता है, किसी दूसरे के ऊपर से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. जैसे इनकम टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है. If impose it is imposed on the X person, then X have to pay. It means he cannot transfer to the Y persons. So direct tax are those which cannot be transferred to the another persons. That is a direct tax. Indirect tax are those which can be shifted to the another person, maybe partially or wholly by the another person, like as a GST है या previous sale tax था, excise duty था, वो क्या है कि दूसरे के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है. जैसे अगर हम होटल में खाना खाने जाते हैं वहाँ पे इम्पोज टैक्स उसको पे करना है, मतलब हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करना है, वो हमसे टैक्स लेगा और वो गवर्नमेंट को पे करेंगे. तो इट मीन्स वो क्या है कि वो शिफ्टेड है, उनको पे करना हमने एक्चुअल में हमने पे किया बट बाद में उन्होंने किया. तो इट मीन्स क्या कि वो शिफ्ट किया जा सकता है. इम्पोज प्रोडक्शन यूनिट पे किया या प्रोड्यूसर्स पे किया या सेलर पे किया या सर्विस प्रोवाइडर पे किया, बट ऑटोमेटिक उसको कस्टमर ने पे किया. इट मीन इट इज शिफ्टेड टू द अनदर पर्सन. सो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट जो होता है, फर्स्ट इम्पैक्ट और लास्ट जो है वो दोनों का डिफरेंट होता है. तो इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. समटाइम्स दे कैन आस्क द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स. तो मीनिंग एंड एग्जांपल के बेसिस पे इसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं. उसके बाद में सेकंड कंपोनेंट हम पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बजट में रेवेन्यू बजट में दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसीव्ड दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विद नाइदर डिक्रीज लायबिलिटी नॉर इंक्रीज एसेट्स. जब ये खर्चा किया जाता है ना तो ये लायबिलिटीज को डिक्रीज करती है और ना ही एसेट्स को इंक्रीज करती है. इट मीन जो गवर्नमेंट के रूटीन वाले जो फालतू के खर्चे होते हैं, जो एसेट्स नहीं बनाते हैं,
फालतू कहने का मेरा मतलब ये है कि जो रूटीन नेचर्स के खर्चे होते हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, इंटरेस्ट पेमेंट हैं, सैलरीज हैं, या स्कॉलरशिप है, सब्सिडी है, गिफ्ट एंड ग्रांट है, वो रूटीन नेचर्स के होते हैं, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ठीक है, वो खर्चे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो ना तो आपकी लाइबिलिटीज कम करते हैं, ना ही एसेट्स को बढ़ाते हैं। इट मीन गवर्नमेंट को ये करने पड़ते हैं, बट गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल करे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ हद तक कम किया जा सकता है। वो हम बाद में पढ़ेंगे जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की इम्प्लीमेशंस पढ़ेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट्स की। बट दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर डिक्रीज लायबिलिटी नॉर इंक्रीज एनी एसेट्स, ना तो ये लाइबिलिटीज को डिक्रीज करते हैं, ना ही एसेट्स को करते हैं। इसके भी टू कैरेक्टर्स हो सकते हैं। पहला है, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, कि ये कोई एसेट्स क्रिएट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के खर्चा हो जाता है बट एसेट्स नहीं बनती है। दैट इज ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन दी जाती है, उससे कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होती है गवर्नमेंट की, बट गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए करती है। इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटीज नहीं कम होती है। इट मींस जो खर्चा कर दिया बट लाइबिलिटीज नहीं की, जैसे एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन, अगर हम रीपेमेंट करेंगे लोन की तो वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज कम हो जाएगी, बट अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट वहीं की वहीं खड़ी हुई है, उससे आपकी लाइबिलिटीज कम नहीं हो रही है। तो आपको जो एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन है वो भी क्या है, आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अनदर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी, मतलब ना तो वो लाइबिलिटीज को कम करे और ना ही एसेट्स क्रिएट करे। इस टाइप के खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट था बजट का, कैपिटल बजट, which is related to the capital receipts and capital expenditure, which is related to the assets and liabilities of the government. First, we will discuss capital receipts. Capital receipts are those receipts which either increase liability or decrease assets. Either increase liability or decrease assets. जो गवर्नमेंट को रिसिप्ट्स प्राप्त हुई है वो या तो लाइबिलिटीज को इंक्रीज कर देगी या फिर आपकी एसेट्स को कम कर देगी। तो उस टाइप की जो रिसिप्ट्स होते हैं उनको हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहा जाता है। ये रिसिप्ट्स दो फीचर्स इसके भी ले सकते हैं। Those receipts create a liability for the government, like for example loan by the government. Okay, if government are taking loan from the another country, then it increase the liability of the government because government have to pay with interest, so it increase the liability of the government, so it is a capital receipts. Second is, these receipts cause reduction in assets of the government. Mean if this type of money we receive, so it reduce the assets of the government, like money received by government by selling its shares. If government sell any share of any company, a government enterprises, then it reduce the assets of the government. तो इस टाइप की जो assets होती हैं, receipts होती हैं, उनको हम capital receipts कहा जाता है। capital receipts कौन सी होती हैं कि those receipts which either increase liability, या तो लाइबिलिटी बढ़ाए या फिर वो assets को decrease करे। तो उस टाइप की जो एसेट्स रिसीप्ट्स हैं उसको हम कैपिटल रिसीप्ट्स कहते हैं। दीज रिसीप्ट्स हैव टू कैरेक्टर, बिकॉज ये मैं अलग अलग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ आइटम्स जब आती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए तो आपको रीजन लिखना होता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सीधा लिख देते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स है, जैसे पूछा लोन बाय द गवर्नमेंट कि आइदर इंक्रीज लायबिलिटी और डिक्रीज एसेट्स, तो मे बी ऐसे नहीं लिखना है, उसमें आपको प्रॉपर रीजन बताना है कि लोन बाय द गवर्नमेंट, सो इट create a liability for the government, or if money received by government by selling its share, so it reduce the assets of the government. So capital receipts are those which either increase liability or decrease assets. कैपिटल रिसीप्ट्स ऑफन क्लासिफाइड एज, इन कैपिटल रिसीप्ट्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे रिकवरी ऑफ लोन है वो हम कैपिटल रिसीप्ट्स में ले सकते हैं। बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटी जितनी भी गवर्नमेंट की हैं। अदर रिसीप्ट्स हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हेन द सेल आउट गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस पार्शियली और फुली, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। इफ गवर्नमेंट सेल देयर एंटरप्राइजेस और मे बी एनी कंपनी और मे बी एनी एंटरप्राइजेस, अगर वो सेल करती है तो उससे जो उसको पैसा प्राप्त होता है वो रिसीप्ट्स तो हो गई, बट वो कैपिटल रिसीप्ट्स है उसके नीचे, क्योंकि उसकी एसेट्स कम हो गई है। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट्स को कम कर देता है, तो इस टाइप की जो रिसीप्ट्स है वो कैपिटल रिसीप्ट्स कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
Capital expenditure are those expenditure which either decrease liability or increase assets. या तो ये liabilities को decrease करे या फिर ये assets को बढ़ा दे, दोनों में से एक होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं होंगे, बट दोनों में से एक होगा, या तो either decrease liability or increase assets. It show the following two factors. It create assets for the government. Means हम अलग अलग ले रहे हैं कि कौन सा ऐसा एग्जांपल है, परचेज ऑफ शेयर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी बाय द गवर्नमेंट. इफ गवर्नमेंट आर स्पेंडिंग मनी टू परचेज द शेयर ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी शायद आपको पता होगा कि जिनका सेटअप एक कंट्री में नहीं होकर डिफरेंट कंट्रीज में होता है, तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं. उन कंपनीज के अगर शेयर खरीद लेती हैं पार्शली या फुली, जैसे भी गवर्नमेंट ने खरीद लिया, तो वो गवर्नमेंट ने खर्चा तो किया, बट उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ गई, इंक्रीज एसेट्स इंक्रीज हो गई, तो उस टाइप की जो एक्सपेंडिचर हुआ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ. बट इसके अगेंस्ट में कॉस्ट रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने अगर लोन लिया हुआ था वो वापस पे कर दिया, रिपेमेंट कर दिया, तो उस टाइप के जो एक्सपेंडिचर है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटीज को रिड्यूस करता है. रिडक्शन रीजन फॉर द कॉजेज रिडक्शन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. सो इस टाइप के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर के आइटम हम ले सकते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, expenditure on machinery and equipment, purchase of shares, loan by the central government to the state government. जब गवर्नमेंट लोन देती है किसी को भी, मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट को देती, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है या अदर कंट्री में देती है, इट मीन्स गवर्नमेंट की एसेट्स बन जाती है. किसी से हमने पैसा लेना है तो वो हमारी एसेट्स है उस समय तक, जब तक हम वापस नहीं लेते हैं. बट अगर हमने उससे वापस ले लिया तो हमारी एसेट्स कम हो गई. इस तरह गवर्नमेंट ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ है तो वो गवर्नमेंट की एसेट्स है, पर जब गवर्नमेंट ने लोन को वापस ले लिया तो उसकी एसेट्स कम होगी, और गवर्नमेंट ने जब दिया तब उसकी एसेट्स जो है वो बढ़ गई. ठीक है, तो इसलिए लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट की एसेट्स को बढ़ा देता है. तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स एंड देन रेवेन्यू रिसीट्स. ओके, now the another component, the deficit. Deficit normally क्या होता है, when budget expenditure is greater than the budget receipts. पहले मैंने बताया था कि सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट. तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं बजट डेफिसिट की, कि बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजट रिसीप्ट. जब बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसीप्ट से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम बजट डेफिसिट कहते हैं. मतलब दोनों साइड, बजट की दो साइड से, दोनों में से बजट एक्सपेंडिचर की साइड ज्यादा होगी, बजट रिसीप्ट्स कम रह गए, हमारे पास आने वाले पैसे कम है हमारे पास, बट हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए जो गैप है उसको हम बजट डेफिसिट कहते हैं. बजट डेफिसिट का फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीप्ट्स. जब हम बजट एक्सपेंडिचर में, टोटल एक्सपेंडिचर में से बजट रिसीप्ट्स को माइनस कर देंगे तो वो बजट डेफिसिट आ जाएगा. बजट डेफिसिट्स को तीन तरीके से, या अनदर वर्ड वी कैन से टाइप्स एंड मेजरमेंट ऑफ बजट डेफिसिट की, तीन टाइप के बजट डेफिसिट लेते हैं एज पर इंडियन कंसेंस. एंड या फिर हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ बजट डेफिसिट की, बजट डेफिसिट को कैसे मेजर करते हैं. The three important type of budget deficit are: first is revenue deficit, second is fiscal deficit, third is primary deficit. So one by one we will discuss here. Revenue deficit. Revenue deficit means the excess of revenue expenditure or revenue receipts. आपने पहले अच्छे से जान लिया होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती हैं. तो जब दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं हम लोग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपकी एक्सेस हो जाती है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीप्ट्स, तो एक्सपेंडिचर एक्सेस हो गया, रेवेन्यू रिसीप्ट्स कम रहेगी, तो जो गैप आएगा उसको हम कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट. इट मींस जो गवर्नमेंट बिना किसी इनकम के, ये कह सकते हैं कि जो खर्चा कर रही थी बिना किसी एसेट्स को क्रिएट किए हुए, तो वो एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के ज्यादा हैं, और वो रिसीप्ट्स कम है जो बिना आपकी लाइबिलिटी बढ़ाए हुए जो पैसा आ रहा था. तो रेवेन्यू डेफिसिट मीन है रूटीन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन लॉ ऑर्डर डिफरेंस इज मोर देन टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीप्ट्स. इसके इम्प्लीकेशंस है या इसके रिजल्ट्स हैं, कह सकते हैं हम लोग कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस होगी. It means government are spending more money on the administrative law and order and defense more than the tax and non-tax receipts.
The reduce RD government revenue deficit. Government should adopt following measure. First is to decrease in expenditure, increase in tax rate as much as possible without resulting harmful effect in the economy. It means if government want to reduce their revenue deficit, then they decrease their expenditure or increase the tax rates. But it does not harm the effect in the economy या without any harmful effect in the economy. ये नहीं है कि जो टैक्स बढ़ा दिया लोगों को एक्सप्लॉइट कर दिया, तो उस वैसा नहीं है कि उस लेवल तक टैक्स रेट को बढ़ा के पॉसिबल एज पॉसिबल विदाउट रिजल्टिंग हार्मफुल इफेक्ट इन द इकोनॉमी, बिना किसी इकोनॉमी पे इफेक्ट डाले हुए अगर गवर्नमेंट उसको बढ़ा के टैक्स को अगर जो पैसा है तो रेवेन्यू डेफिसिट को कम किया जा सकता है. सेकंड है इसके डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू भी रेवेन्यू कम किया जा सकता है अगर डेफिसिट आ रहा है तो. इफ गवर्नमेंट ट्राइड सेल देयर प्रॉपर्टीज assets which are in loss, so they can earn money and they can reduce the revenue deficit at some extent. Borrowing from public, RBI or rest of the world. Sometimes government borrow money from the public, RBI, or maybe from rest of the world. Then in this way the government also reduce the deficits. Second type of deficit is fiscal deficit. Fiscal deficit means the excess of total expenditure over total receipts other than borrowing. Total expenditures ज्यादा होते हैं टोटल रेसिप्ट से बोरोविंग को छोड़ के, क्योंकि बोरोविंग एक उधार लेना है और बोरोविंग इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट होता है. कई बार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आ जाता है कि फिस्कल डेफिसिट निकालना है, आपको बोरोविंग दी हुई है बाकी कुछ चीजें दी नहीं हुई है, तो बोरोविंग इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट होता है. तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेसिप्ट्स other than borrowing is a fiscal deficit. Fiscal deficits हम कैसे निकाल सकते हैं? Budget expenditure minus budget receipts other than borrowing, or fiscal deficit is equal to revenue expenditure plus capital expenditure minus revenue receipts plus capital receipts other than borrowing is called a fiscal deficits. क्या fiscal deficits is equal to the borrowing? इसके कुछ implications हैं. Total borrowing के बराबर हो, that already I told you. It cause inflation in the economy. If you are borrowing more money, it means people will spend more money, so it increase the inflation in the economy. Increase in foreign dependence associated with economic and political interference by the lender country. It increase our economic slavery. Means if we are taking more money from the another country, it means dependence on the another country increase, and then the lender country may be influenced in the political or economic issues with the country, or this increase our economic slavery. It means we are depend more on the another country. Increase in financial burden of repayment on future generation. Government may be taking a loan more and more, so it increase the repayment burden on the future generation, because present time government take money and then with interest the future generation will pay, so it give more burden on the future generation. Okay, the last is the primary deficit. Primary deficit is the fiscal is the difference between fiscal deficit and interest payment. जब fiscal deficit जो हमने निकाला है और interest payment दोनों का difference निकाल देंगे तो हमारा primary deficit आ जाएगा. और primary deficit show borrowing requirement of the government to meet her expenditure excluding other than interest payment. मतलब हमने जो डेफिसिट हमारा आया था फिजिकल डेफिसिट को बोरोविंग था, तो इस साल हमने जितना बोरोविंग लिया या उधार लिया है उसमें से हमने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, माइनस कर दिया, तो इसका मतलब जो बाकी बचा वो खर्चा है कि गवर्नमेंट ने वो एक्स्ट्रा खर्चे किए हुए हैं अदर देन इंटरेस्ट के. इंटरेस्ट का जो करना था वो हमने माइनस कर दिया फिजिकल डेफिसिट में. तो प्राइमरी डेफिसिट शो करता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट को खर्चे के लिए कितना पैसा और चाहिए, तो वो प्राइमरी डेफिसिट होता है. प्राइमरी डेफिसिट जो है वो ये डायरेक्टली शो कर देगा कि आपने कितना एक्स्ट्रा खर्चा किया है. नाउ द लास्ट मेजर टू करेक्ट फिस्कल बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट को अगर हमें मेजर करना है, इसको करेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वेयर इट इज नॉट नेसेसरी. जहाँ पे नेसेसरी नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं हो रहा है, नहीं करना चाहिए. टैक्स रेज करना चाहिए. नॉन टैक्स रिसीव्स वेयर इट इज पॉसिबल, जब तक पॉसिबल है टैक्स का रीच करके और नॉन टैक्स रिसीव्स को रीच करना चाहिए. डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इनसफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है जो लॉस में जा रहे हैं, इनसफिशिएंट है, उनका डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए. And deficit financing mean borrowing by the government from the RBI. So government can also adopt these methods. They can borrow money from the RBI
and maybe government can borrow from the public or rest of the world. So these are the some measures. Now this is in the like as a mind mapping type, the concise view of the budget, total budget, government budget, type of budget, surplus budget, objective of the budget in one side, and budget receipts, budget expenditure, etc. So for only mind mapping this. Now, some important question. Sometimes the CBSE asks the questions. Maybe any another question is also there, but I'm taking only the some question. First is the difference between fiscal deficit and primary deficit that already we have discussed, and explain the implication of the revenue deficit. Revenue deficit implication. Difference between revenue receipts and capital receipts, and distinguish between direct tax and indirect tax with example बताने, and distinguish between revenue expenditure and capital expenditures. So these are the some important questions. Maybe another important question some they can ask in the CBSE, but these are the major important questions. Thank you.